student, in this part of the chapter, that is the indicators, in this part we will get different colors. Indicators means all about colors we will study here. Natural color as well as synthetic colors. How would you find whether a substance is acidic or basic or neutral? By tasting it in is the one way, but it is not safe. To overcome this, chemicals such as indicators have been developed. So what is an indicator? Indicator are the substance that show a change in color, that are called as the indicator when brought in contact with acids and bases. Indicators are of two types. One is natural indicator and another is synthetic indicator. Natural means extracted from plants. Natural indicator around us are litmus, it's the natural dye, turmeric and the China rose. With a litmus, a dry, a natural dye. Where do the lichens come from? The bark of the trees, that is derived from the lichens. Paper changes the color. How it changes the color? It is acidic or it is a basic. This indicator is available in two forms, that is red litmus paper and blue litmus paper. You can see two buckets are there. One is basic and another is acidic. If I put the blue litmus paper into the acid will turn litmus paper to red. Now if I put the red litmus paper into the base, then the red litmus paper will change to blue litmus paper. That means it is a base. So in this way we can identify red and blue litmus paper, and here we can indicate the color. See how cabbage is taken as the natural indicator. You can see in the video. See the cabbage. The cabbage leaves are taken out, and after taking out properly, these are taken into a mixture, putting water, then the leaves, and then this starts grinding it. In a very fine paste. Now take it out इसको छान लेना है। घर में ऐसा न्यूज़पेपर बना सकते हैं। एक शीट उसमें इंडिकेटर इज द टर्मरिक. टर्मरिक जो हमारे किचन में इजीली अवेलेबल होता है तो उसको हम बोलते हैं टर्मरिक. चाइना रोज भी एक इंडिकेटर है, इसको हम हिबिस्कस बोलते हैं. इट इज़ अ नेशनल फ्लावर ऑफ मलेशिया. मलेशिया का नेशनल फ्लावर है. ओके.
causes change in the color. The different types of Such substances are called indicators. Some of the naturally occurring indicators are turmeric, litmus, China rose petals, also called hibiscus, etc. Let's learn how we can use turmeric as indicator. We need turmeric in the powdered form and water to test the nature of the sample, if it is acidic or basic. Take some water in a beaker, mix tablespoon of turmeric powder in it and produce turmeric paste. Apply this paste on filter paper and dry it. After drying, the turmeric paper turns yellow. Make strips of this paper. Now, we can test if the substance is acidic or basic. If we put a drop of basic solution on the strip, then it turns to red. Now, if we put a drop of acidic solution on the strip, then there will be no change. However, if we use the used red strip for testing, then it turns back yellow again. For bases, yellow turmeric strip turns to red, while for acids, the red turmeric strip turns to yellow. If there is no effect, then the solution is neutral. Here we complete this topic. For more such videos, visit Indicators are of two types, phenolphthalein and methyl orange, that are used as indicators. Phenolphthalein जब हम एसिड में यूज़ करते हैं तो वो हो जाता है कलरलेस, और जब हम बेस में यूज़ करते हैं तो हो जाता है पिंक. मिथाइल ऑरेंज जब एसिड में यूज़ करते हैं तो हो जाता है रेड इन कलर, और बेस में हो जाता है येलो इन कलर. तो सोल्यूशन डू नॉट शो अ चेंज इन कलर इन एनी इंडिकेटर. सो इट इज़ नाइदर एसिडिक और बेसिक. सो ये सब्सटेंस जो होता है ऑलरेडी दे आर अंडर विच सब्सटेंस, दे आर न्यूट्रल सब्सटेंस. जो एसिड भी नहीं है, बेस भी नहीं है, तो वो क्या है, वो न्यूट्रल है. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रल आर वाटर, सोडियम क्लोराइड, शुगर एट्सेट्रा. एंड बेसिस कैन बी द स्ट्रॉन्ग और इट कैन बी वीक. तो साइंटिस्ट इसको ईजी करने के लिए एसिड का एक स्ट्रेंथ दिए हैं. सो डिफरेंट स्ट्रेंथ हैव बिन गिवन, व्हाट इज़ नोन एज पीएच नंबर उसको बोला जाता है. तो इसका जो रेंज होता है वो 1 से लेकर 14 तक होता है. अगर पीएच का वैल्यू 1 है तो वो क्या है, स्ट्रांगली एसिडिक होता है. अगर पीएच का वैल्यू 14 है तो वो स्ट्रांगली बेसिक होता है. और जो एसिडिक भी नहीं है, बेसिक भी नहीं है, तो उसका वैल्यू क्या होगा पीएच का, 7, उसको हम न्यूट्रल बोलेंगे. पेपर से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा सब्सटेंस ज़्यादा बेसिक है, और जो एसिड बेस नहीं है वो न्यूट्रल है. सो जैसे कि HCl या H2SO4 है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये आ जाएगा किसमें, पीएच वैल्यू 1 या 2 में आ जाएगा. फिर H2SO4 है, HCl है, लेमन जूस है, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग से थोड़ा सा वीक एसिड है, तो ये आ जाएगा रेंज 3 से लेके 6 तक. फिर उसके बाद बीच में न्यूट्रल है, जैसे कि मिल्क है, प्योर वाटर है, तो ये सब जो है ना एसिडिक में आएगा ना बेसिक में आएगा, तो ये किस में आ जाएगा, ये न्यूट्रल में. तो इसका पीएच कितना होगा, 7. नेक्स्ट होगा जो लाइट ब्लू कलर का है, ये वीक एल्कली, मतलब जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, बोरेक्स, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एमोनियम वाटर, ये सब आ जाएगा 8 to 11 में, जो कि वीक एल्कली है. ठीक है, जो कि उसमें वाटर का क्वांटिटी मिक्स होता है. फिर सबसे स्ट्रॉन्ग एल्कली, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, जो कि है NaOH या KOH, तो इसका रेंज होगा 12 to 14 तक. इंडिकेटर को हम बहुत इजीली बना सकते हैं, हम पहले भी वीडियो में देख चुके हैं. तो फ्लावर से हम बना सकते हैं क्या, चाइना रोज़, फिर रूट से बीट रूट, फिर स्टेम से टर्मरिक, एंड लीव्स से रेड कैबेज. सो अनियन हो गया, रेड कैबेज हो गया, तो ये आर ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, सच एज पेटल्स इन वाटर, समटाइम्स स्टीयरिंग आउट plant parts. This solution gives different color in acidic as well as in basic solution. कैबेज जूस है या तो अनियन का जूस है, ये पर्पल होता है विथ न्यूट्रल्स एंड ग्रीन येलो विथ बेसिस. तो अनियन जूस जो है वो शो करता है एक ही कलर change. You can put directly rose petal in the dish containing vinegar or lemon juice and few petals
in soap solution and see the difference in color. Let us remember what we have studied. So I will ask you some questions. So can you name two strong and weak bases? Yes, you can. Strong means are what? HCl, hydrochloric acid, then nitric acid, then sulfuric acid. Weak base, acetic acid, carbonic acid. Next question. Give two example of bases that are alkalis. क्या है वो? NaOH and KOH, that is sodium hydroxide and potassium hydroxide. Which base is called milk of magnesia? Magnesium hydroxide. Then which base is used as an ingredient in whitewash? Whitewash में कौन सा यूज होता है? Calcium hydroxide. What is the pH range? 1 से लेके 14 तक. Which part of the following plants are used for preparing indicators? चाइना रोज का कौन सा पार्ट में यूज होता है? फ्लावर पार्ट में. टर्मरिक का स्टेम पार्ट में. Let me ask you fill in the blanks. Dash is the component of borax mixture. What is that? Slake lime. Methyl orange will turn red in dash acidic medium. Phenolphthalein क्या होगा? Change color from dash to dash in basic medium. जल्दी बताओ. It will be what? Colorless to pink. Then fourth one, dash is a neutral substance. कौन सा neutral substance है दोनों में? सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम क्लोराइड? सोडियम क्लोराइड, क्योंकि वो सॉल्ट है, ना वो एसिड है ना वो बेस है. फिर फिफ्थ वन, पीएच वैल्यू. स्ट्रांगली एसिडिक है तो पीएच वैल्यू क्या होगा? 1. रेड कैबेज जूस चेंजेस टू डीप रेड विथ व्हाट मीडियम? Acids, and purple with neutrals. Now we will read all about salts in this part. Salts is general term used as a substance formed by when acid and base react with each other. जब acid और base दोनों एक साथ react करते हैं तब salt का जन्म होता है. So this reaction is called as what? Neutralization reaction. So the reaction between vinegar and baking soda is neutralization reaction. तो इस टाइप को रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइज. ना एसिड है ना बेस है तो क्या है ये न्यूट्रल है. सो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो ये चीज़ याद रखना कि जब भी सॉल्ट्स आए उसका मतलब वो कौन सा रिएक्शन में आएगा? इट विल बी अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. वो न्यूट्रल होगा, ना एसिड ना बेस. ना सपोज अभी हम क्या करते हैं कि रिएक्शन करते हैं विनेगर और बेकिंग सोडा, तो हमको क्या मिलेगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. क्यों? क्योंकि विनेगर एसिड है और बेकिंग सोडा जो है वो बेस है. तो दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा? कौन सा रिएक्शन होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. नाउ विनेगर प्लस बेकिंग सोडा दैट गिव्स अस सॉल्ट. और उसमें से क्या कम्स आउट हो जाएगा? क्या निकलेगा जब ये रिएक्शन करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर निकलेगा एज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन. How a common table salt is formed? It is formed by the reaction between what? Hydrochloric acid, that is HCl, that is acid, and reaction with base, that is sodium hydroxide. It gives NaCl, that is sodium chloride plus water, that is H2O. स्टूडेंट सॉल्ट जो है वो एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है. लेकिन एसिडिक सॉल्ट जो है वो फॉर्म करेगा जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा वीक बेस के साथ, तभी सॉल्ट फॉर्म करेगा. जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड पे वीक बेस है, तो ये दोनों का जब रिएक्शन होगा तभी सोडियम क्लोराइड जो है वो फॉर्म करेगा. तो बेसिक सॉल्ट आर फॉर्म व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विद अ वीक एसिड, when a strong acid react with strong base, so that is called as the neutral salts are formed. Video of neutralization reaction in our daily life. Sometimes we feel inflammation in our stomach. Why is it so? Our stomach secretes hydrochloric acid, HCl, a very strong acid which helps us to digest food. But too much secretion of acid in the stomach causes inflammation. To relieve the sensation of inflammation, an antacid is taken. Antacid contains base that neutralizes the excess acid in stomach. Soils which we use for cultivation can become acidic
or basic in nature. The basic soils are treated with organic compounds which release acid. Thus, the soil becomes neutral. Many factories release the acidic wastes which, after falling in the water bodies, damage them. As a result, living organisms of water die. The acidic wastes are neutralized with the bases like slaked lime before their disposal. रेशन रिएक्शन कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? वो अप्लाई होता है इंसेक्ट स्टेज में, मतलब जो इंसेक्ट हमको काट देता है तो वो जो काटता है वो स्किन में एसिड फैलाता है, और इसको अगर हम कैलामाइन लोशन यूज़ करेंगे तो वो लोशन से वो जो है क्या उसको न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि वो बेस का काम करेगा. दूसरा है इंजेक्शन. इंजेक्शन मतलब अगर हमको प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो सकेगा तो हम क्या करेंगे, एंटासिड खाएंगे, जैसे जेलोसिल खाएंगे या तो डाइजिन खाएंगे, ताकि हमारा जो अंदर का एसिड है वो धीरे धीरे कम हो जाए. सॉइल का ट्रीटमेंट, सॉइल को जो है प्रॉपरली ट्रीटमेंट ऐसा करेंगे कि वहाँ सॉइल में ज़्यादा एसिड नहीं होना चाहिए, नहीं तो सॉइल जो है ख़राब हो जाएगा, प्लांट को ख़राब कर देगा. तो सॉइल में हम क्या मिक्स करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, सो दैट इट कैन न्यूट्रलाइज द सॉल्ट, और वी कैन ऑल्सो यूज कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज चॉक. नेक्स्ट है फैक्ट्री का जो वेस्ट है. जो फैक्ट्री का वेस्ट है उसमें तो बहुत सारे एसिड हैं जो रिवर में आ रहे हैं, तो उसके एसिड्स को हमको बेस में कन्वर्ट करना है ताकि एक्वाटिक लाइफ जो है वो बच सके. सो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा वेस्ट को बाय एडिंग द बेस. तो कौन सा बेस ऐड करेंगे, स्लेक लाइम. Properties of salt. So salt have different properties. First is melting and boiling point. Salts are mostly solids and they melt when it get boiled. जब उसको boil होता है हाई टेम्परेचर में तो salt जो है वो melt कर जाता है. Solubility in water. Next point. Salts are generally soluble in water. वाटर में वो घुल जाता है, मिक्स हो जाता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, अमोनियम कार्बोनेट आर ऑल soluble salts. इनसॉल्यूबल सॉल्ट्स. इनसॉल्यूबल मतलब जो सॉल्यूबल नहीं है पानी में, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड, लेड क्लोराइड, कॉपर कार्बोनेट. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. सॉल्ट्स आर फाउंड एज क्रिस्टल्स विथ वाटर मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन देम. तो सॉल्ट जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में रहता है वाटर मॉलिक्यूल्स का, तो उसको हम बोलते हैं वाटर इज called water of crystallization. Such salts are called hydrated salt. Hydrated मतलब उसमें water particle present रहता है, इसीलिए उसको बोला जाता है hydrated salt. Example, copper sulfate crystals have 5 molecules of water. For each copper sulfate molecule, that is कि CuSO4.5H2O है, तो 5H2O मतलब 5 molecules of water जो है इसमें present है, तो इसको बोला जाता है copper sulfate crystal. Copper sulfate having 5 molecules, and crystals have its shape, gives color to some crystals. For example, copper sulfate का कलर क्या है, blue vitriol, due to its blue color. ऑन हीटिंग, जैसे हम हीट करते हैं तो जो हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है वो लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एंड एज अ रिजल्ट क्रिस्टल लूजेस देयर शेप एंड कलर चेंजेस टू अ पाउडरी सब्सटेंस. कॉपर सल्फेट को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ब्लू विट्रोल. वाई, ड्यू टू इट्स ब्लू कलर. एंड वाटर इज प्रेजेंट मतलब ये है हाइड्रेटेड सॉल्ट, और अगर वाटर उसमें नहीं है, वाटर नॉट प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड एज द anhydrous salt. Let us see the video of water of crystallization. Let's start Experiment with to the grow crystals of copper sulfate. What is crystallization? The process of obtaining crystals of a soluble substance from its hot saturated solution is called crystallization. Crystallization is only a physical change because no new substances are formed during the process. It involves only a change in physical state. Crystallization is used to obtain pure substances from naturally occurring impure substances. Here's an experiment to see how crystallization occurs. Take 100 milliliters of water in a beaker and heat it
on a Bunsen burner. When water begins to boil, add about 2 milliliters of dilute sulfuric acid and then a spoonful of CuSO4. Stir the contents with a glass rod. Stir it continuously and add more impure copper sulfate until no more of it dissolves. Fasten a thread in the middle of a wooden stick and suspend in a glass. Stop heating and pour the saturated copper sulfate solution in a glass. Place the glass aside and cover the beaker with a cardboard. Leave the setup for 24 hours. After 24 hours, you will find big blue crystals of pure CuSO4 at the base of the beaker. Then remove the crystal from the glass and dry in warm air. Now we will study uses of salt, salt name and their chemical formula and what is their use. First is calcium carbonate, as used as a marble or limestone chalk. So it is used in the form of a marble to make the lime, cement and for extraction of iron. Next is sodium carbonate, as used as a washing soda, Na2CO3.10H2 इन क्लीनिंग, इन डिटर्जेंट्स फॉर वाटर सॉफ्टनिंग, इसके लिए हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा जैसे यूज़ करते हैं बेकरी में और मेडिसिन्स में. सिल्वर नाइट्रेट NaAgNO3 is used in photography for developing the flames. फिर अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 फर्टिलाइजर्स में यूज़ करते हैं क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, तो एक्सप्लोसिव में. फिर आता है पोटैश एलम, जो फिटकरी हम लोग पानी में डालते हैं ताकि पानी साफ़ हो जाए. फिर सेवेंथ यूज़ ये है कि सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट NaCl, वो हम यूज़ करते हैं फूड में डालते हैं खाने में ताकि खाने का टेस्ट आए. एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन एंड सोडियम कार्बोनेट. आफ्टर स्टडिंग दिस मच, now I think that you can able to answer some of the questions. So answer the following question. Identify the salt in the following substance. First baking soda. तो baking soda किस टाइप का salt है? सोडियम बाइकार्बोनेट. नेक्स्ट मार्बल क्या है? कैल्शियम क्लोराइड. कॉमन सॉल्ट क्या है? सोडियम क्लोराइड. गिव अ यूज ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट. AgNO3 इसको किस में यूज़ करते हैं? फोटोग्राफी में. NH4NO3 किस में यूज़ करते हैं? फर्टिलाइजर्स में. Na2CO3.10H2 डिटर्जेंट में यूज़ होता है. CaCO3 यूज़ होता है टू मेक द लाइम फॉर वाइट वॉशिंग. NaHCO3 used in bakery. NaCl is used for seasoning the food. Next, fill in the blanks with correct words. Dash salt have lost their water of crystallization. Which salt? Anhydrous salt. Dash reaction is a reaction between an acid and a base to form a salt. It is what? Neutralization reaction. Dash is formed in the reaction between hydrochloric acid and sodium chloride. Fourth one, dash is used for purification of water, that is potash alum. Fifth one, dash is used to neutralize liquid waste from the factories, it is slaked lime. To summarize the topic, water is neither a acid or a base, water is neutral. Indicators are substances that show a change in color when brought in contact with acid or base, so color get changes. Salts are found when an acid reacts with base. So here we end the chapter. Thank you students for listening and keep smiling. Do properly work in the note. Now let us start with the exercise part of this chapter. So you will write the fill in the blanks, choose the correct word and very short in the textbook, and you will write the short and long question answer in your fair notebook, that is fair notebook of physics and chemistry of Rajalakshmi ma'am. Understood? Now let us start the fill in the blanks. Dash acid are highly corrosive and can cause severe burns. What is that? Strong. Dash are slippery to touch.
Bases. Dash acid is used in manufacturing of paints and dyes, that is sulfuric. Dash is used to unblock drains, that is sodium hydroxide. Dash litmus changes to dash in acidic. Blue litmus changes to red. Now choose the correct option. So let us start with this. Which acid is called the king of chemicals? King of chemicals is called by sulfuric acid. Which acid is present in vinegar? Acetic acid. Which of the following is weak mineral acid? Carbonic acid. Which of the following is used to neutralize bee sting? It's calamine lotion. Which of the following cannot be used as an indicator? It is sugar. Then, which of the following is a salt? Both A and B. Potash alum and sodium potassium hydroxide. Which acid is used to remove deposits from inside the boilers? Hydrochloric acid. Which of the following is a strong base? KOH. Which of the following pH values present in strong alkali? That is pH 13. Which of the following is a characteristic property of most of the salt? That is high melting point. Match the column. First, CH3COOH. It will be what? Acetic acid. Next, NaGNO3. What it will be? Second one, silver nitrate. Third one, NH4NO3. That will be ammonium nitrate. Fourth one, CaOH whole 2. It will be what? Calcium hydroxide. Then fifth one, CaCO3, that is calcium carbonate. Now very short answer type. Give one word for the following. Bases that dissolve in water are what? Alkalis. A substance that show a change in color when brought in contact with acid or base. It is what? Indicator. Universal indicator that is soaked into paper, pH paper. Substance formed when strong acid react with strong base, salts with water of crystallization, that is hydrated salts. So let us start short question answer type questions. State any two properties of acids and bases. First property is acids are sought to taste and are corrosive in nature. Acids are soluble in water. Bases are bitter in taste. Solution of the base are slippery to touch and second question, why acids or bases are sometimes added to soil? To neutralize the soil. Third question, what is the neutralization reaction? Give an example. The reaction in which acid reacts with base to form salt is called neutralization reaction. Example is hydrochloric acid react with sodium hydroxide to form sodium chloride. Fourth question, how can a hydrated salt be converted into anhydrous salt? Give an example. So, on heating, hydrated salt lose their water of crystallization. The hydrated salts that have lost their water of crystallization are called what? Anhydrous salts. For example, when blue crystals of copper sulfate are heated, they lose their water of crystallization to form white powder of anhydrous copper sulfate. Question, here you have to compare the following table, filling the colors of indicator. Now, first is given hydrochloric acid. So, in blue litmus, hydrochloric acid, in blue litmus its color changes to red, and in red litmus there is no change. Phenolphthalein, it is colorless. Methyl orange, it is red. Then sodium hydroxide solution. So it is a base, no change in red litmus, blue litmus. In red litmus change to blue, and in phenolphthalein it is changed to pink color. Methyl orange, it is changed to yellow. Then sodium chloride, there is no change in blue litmus. In red litmus also no change, phenolphthalein also no change, and methyl orange also no change. Long question answer. How are natural indicator prepared? Give example of a flower, root, stem and leaf can be used as an indicator.
What are the color change observed when red cabbage of the juice is acidic, neutral and basic? So in this answer, what you will write is indicators can be prepared very easily from brightly colored parts of the flower. जैसे कि चाइना रोज या रोज, रूट जैसे कि बीट रूट, स्टेम जैसे कि टर्मरिक. Leaves red cabbage indicator solution can be prepared by boiling colored parts of the plant such as petals in water. Boil करके हम कर सकते हैं, colors उसके निकाल सकते हैं. So this solution gives a different color in acidic as well as in basic solution. For example, red cabbage juice will change to deep red with the acid to purple when it neutral with the green and yellow with the bases. Let us come to the second question. Explain the following. First, a vinegar is used in packaged food items. So most microorganisms cannot live in acidic environment. An acidic environment either slows down their activity or can kill them. इसलिए हम vinegar को add करते हैं packaging food में. Next, second B. Slaked lime are added to the factory waste. So liquid waste from the factories are often contain what acid. If it reaches the river acid will kill all the aquatic animals. So this can be prevented by using the neutralization reaction. Now second C. Magnesium hydroxide is used as an antacid. To digest the food, the liquid in the stomach must be acidic. But too much of acidicity can lead to indigestion. So one should take antacid, which is usually contain baking soda or magnesium hydroxide to neutralize excess acid in our body. Next D. Strong acid and bases should be handled carefully. Why? Because strong bases are very corrosive and can burn the skin. Acid can also burn human tissues upon contact and can damage their clothes, paper. One should handle strong acid and bases with care. Third question. What is water of crystallization? Explain with the help of an example. In that you will write salt are found as a crystal with water molecules present in them. Water is called the water of crystallization and such salt are called hydrated salt. For example, copper sulfate crystals have 5 molecules of water for each copper sulfate molecules. This is written at CuSO4.5H2O. It also gives color to the crystals. For example, copper sulfate is also called blue vitriol due to its blue color on heating. Hydrated salt lose their water of crystallization. As a result, crystal lose the shape and color and change to powdery substance. Hydrated salts that have lost their water of crystallization are called anhydrous salt. When hydrated copper sulfate is heated, it gives water out from the molecules to form powdery anhydrous copper sulfate. On adding water, the substance convert back to hydrated copper sulfate solution again. So students, I have completed. Thank you for listening, and you will write this in your physics chemistry notebook of Rajlakshmi ma'am. Thank you.